Okay, so hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about cholinergic drug. Okay, cholinergic drug is an important chapter. Okay, लास्ट हमने एड्रेनर्जिक ड्रग भी देखा था जो कि इसी टाइप में है और डिग्री प्लस डिप्लोमा के लिए केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोनों भी कोलिनर्जिक एड्रेनर्जिक ड्रग. ओके, सो कोलिनर्जिक ड्रग यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं. ओके, सो टुडेज लेक्चर we are going to discuss about cholinergic drug, then classification, chemical classification of cholinergic drug. Okay, so one by one classification देखेंगे हम यहाँ पे. So starting में ये जो drug दिए है ये important drug है. Okay, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ निवोस्टिग्मेन और फाइसोस्टिग्मेन और पाइरिडोस्टिग्मेन और पिलोकार्पिन. ओके, सो स्ट्रक्चर प्लस केमिकल नेम के लिए 4 मार्क्स में क्वेश्चन है. इम्पोर्टेंट चैप्टर है. Okay, cholinergic drug, all cholinergic drug are important for the exam point of view. Okay, so these are the examples of cholinergic drug. Now what is the definition of cholinergic drug? Okay, so definition क्या है? cholinergic drug means what? So यहाँ पे simple definition दिया है देखो. Okay, so this is definition. The drug which produce effects similar to those of acetylcholine or cholinergic nerve stimulation are termed as cholinesterase, are also termed as cholinergic drug. Cholinergic drugs are also known as a parasympathomimetic drug. आपको क्वेश्चन पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग करके भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना. पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, माइमेटिक मीन्स कोलिनर्जिक. Okay, and sympatholytic, lytic means antagonist. Okay, so parasympathomimetic means cholinergic drug and sympathomimetic means adrenergic drug. Okay, parasympatholytic means cholinergic antagonist. ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है. क्वेश्चन किसी टाइप में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में. सो व्हाट इज द कोलिनर्जिक ड्रग? द ड्रग विच प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू दोज एसिटाइल कोलिन और कोलिनर्जिक नर्व. जो कोलिनर्जिक नर्व है जो कि हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन जो प्रोड्यूस फॉर्म कर रहा है. ओके, दैट स्टिमुलेशन आर टर्म्ड एज कोलिनिस्टरेज. दिस आर आल्सो नोन एज कोलिनिस्टरेज. जो भी एसिटाइल कोलिन फॉर्म हो रहा है दैट इज that terms as you means known as cholinesterase are also termed as a cholinergic drug. वही cholinergic drug हम ले भी सकते हैं, है ना. So these are the physostigmine, neostigmine, these are the cholinesterase. Okay, so cholinergic drug are also known as parasympathomimetic drug. important है. तो ये डेफिनेशन हुआ, सिंपल डेफिनेशन है 2 मार्क्स के लिए. देन नाउ इंट्रोडक्शन. मेन इंट्रोडक्शन क्या है? ओके, इसका आपको नोट करके भी क्वेश्चन आता है टू द शॉर्ट नोट ऑन कोलिनर्जिक ड्रग और पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग. ओके, so what is the introduction? These pharmacological agents when administered externally administrate करना है. main neurotransmitter of parasympathetic system is acetylcholine. main neurotransmitter है जो कि हमारी बॉडी में acetylcholine फॉर्म होता है, राइट. then the drug which extend pharmacological action like acetylcholine or drug which bring about cholinergic nerve are called as cholinergic drugs. जो भी कोलिनर्जिक नर्व पर काम कर रहा है, ओके, ब्रिंग अबाउट कोलिनर्जिक नर्व, ओके, दैट इज कोलिनर्जिक ड्रग. बहुत सिंपल है. क्लियर? द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग. ओके, और कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको समझ आने के लिए अच्छा रहेगा ये. सो दीज आर दी these drugs bring about stimulation of parasympathetic nervous system. They are called as a parasympathomimetic drug. Obviously, the next there are two types of cholinergic receptors which responds to two different plant alkaloids, namely muscarine and nicotine. Important है, and termed as a muscarinic and nicotinic receptor respectively. Cholinergic drug के two receptors है. First one is a nicotinic and second one is a muscarinic receptors. Okay, ये receptors आपको याद रखनी चाहिए.
कोलिनर्जिक अलग है एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अलग है. ओके, देन नेक्स्ट. Okay, the pharmacological action shown by stimulation of muscarinic and nicotinic receptor are called as muscarinic and nicotinic action respectively. Then muscarinic action of acetylcholine. अब acetylcholine का जो रिसेप्टर है उसका एक्शन क्या है? कार्डियक इनहिबिशन, पेरिफेरल vasodilation, constriction of pupil of eye means dilation, then increase in a salivation or and increase in a flow of salivary gland. Okay, then constriction of a smooth muscles of a GI means gastrointestinal tract and urinary bladder. Then hence the cholinergic drug which stimulate the muscarinic receptor are used to treat. First one is a tachycardia, cardiac arrhythmia, scleroderma, glaucoma, and then atony of guts and urinary retention. Okay, so the A receptor used करते for the treatment of that type of diseases. Clear? Then next. Okay, निकोटिनिक एक्शन. अब मस्कैरिनिक रिसेप्टर का तो एक्शन हमने देखा. अभी निकोटिनिक एक्शन क्या है? द इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. जो भी आपके स्केलेटल मसल्स है उसको स्टिमुलेट कर रहा है. देन hence the drug stimulating nicotinic receptor are used to treat of myasthenia gravis, disease of muscular weakness. एक टाइप का डिसीज है myasthenia gravis. ओके, मस्कुलर वीकनेस, मसल्स का डिसीज है. ओके, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. अब मेन पॉइंट यहाँ पे हुआ क्लासिफिकेशन. इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये आपको मगअप करके ही याद रखना होगा. सो फर्स्ट क्लास is the ester of choline, is the acetylcholine, methacholine, carbachol, butynacol. Clear? Then cholinomimetic alkaloids. Alkaloids कौन कौन से है इसमें जो कि हम एज अ कोलिनर्जिक ड्रग करके यूज कर सकते हैं? पिलोकार्पिन मेन है, मस्कैरिन एंड देन अरेकोलिन. क्लियर? देन थर्ड क्लास है. ओके, क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन पे भी सेपरेट. सो कोलिन इस्टरेज इनहिबिटर. नाउ इनहिबिटर कौन कौन से हैं? एंटीकोलिन इस्टरेज, देन रिवर्सिबल सिंथेटिक आर द नियोस्टिग्मिन एंड रिवर्सिबल नेचुरल आर द फाइसोस्टिग्मिन. देन इरिवर्सिबल ऑर्गेनो फॉस्फोरस सिप्यूरियस. क्लियर? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन. मेन है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये क्लासिफिकेशन आपको मीन्स याद रखने के लिए अच्छा नहीं है तो सेकंड और एक क्लासिफिकेशन है जो कि उसके एक्शन वाइज है. तो फर्स्ट cholinesterase which acts directly on the effector cells. First one is the acetylcholine and second one is the carbachol. Then anticholinesterase. एंटीकोलिनेस्टरेज कौन कौन से हैं? फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन एंड पाइरोडोस्टिग्मिन. आपको एग्जाम में एमसीक्यू में भी क्वेश्चन हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एंटीकोलिनेस्टरेज. एंटीकोलिनेस्टरेज मीन्स जो कि कोलिनेस्टरेज फॉर्म नहीं होने दे रहा है एसिटाइलकोलिन. दीज आर द एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग. ओके, the natural alkaloids which acts on the effector cells directly is the pilocarpine and muscarine. These are the alkaloids. No, this is the simple classification. ओके, सो ये रिसेप्टर्स हैं. अगर आपको याद रखना है ये इमेज इम्पोर्टेंट है. ओके, ये सेव कर सकते हो आप या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. मस्कैरिनिक रिसेप्टर है. मस्कैरिनिक रिसेप्टर का क्या क्या एक्शन है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, eyeballs, intestine, okay, and exocrine gland. ये muscarinic nerves है. Then nicotinic adrenal medulla and skeletal muscles. Clear? So important image है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसको सेव करके याद कर सकते हो. क्लियर? सो चलिए, आज हमने क्लासिफिकेशन प्लस explanation of cholinergic drug then main definition of cholinergic drug देखा है. नेक्स्ट लेक्चर से हम 1 by 1 ड्रग स्टार्ट करेंगे. ओके, नियोस्टिग्मिन, स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, प्रॉपर्टीज, यूजेस. क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके,
चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।